Assalamu alaikum. I hope you people are doing well and good morning for non-Muslims. Today's topic of discussion is about folds and in it's basically in subject of geology as structural geology, and it's talk of originally planar surfaces that have been bent or curved during permanent deformation. Its deformation is not its deformation is permanent, and these folds vary in sizes from microscopic level to mountain size folds. I don't have picture, but if I find, then I will give you people its original strata deformation. So they form under very condition of stress, pore pressures and temperature gradients, and by the some sedimentary rocks, in metamorphic rocks, and as well as in igneous rocks. There are so many fold belts in area called as orogenic belt, orogenic zones, and folds are commonly formed by shortening of existing layers, but may also be formed as a result of displacement on a non-planar fault at the tip of propagating fault. By this definitions, I am going to discuss के folds क्या होते हैं. Folds basically curved portion को कहते हैं, और बेंट पोर्शंस होते हैं सेडिमेंट्री स्ट्रेटा के या मेटामॉर्फिक स्ट्रेटा के. तो इनकी ये क्यों बनते हैं, क्या इसके पीछे फोर्सेस हैं, तो वो ढूंढनी बहुत आसान है. और बाज़ जो होती है शॉर्टनिंग हो जाती है एरिया की, तो हो जाते हैं. और इसके अलावा क्या होता है इनके साथ, हाँ, इनके जो टाइप्स हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी. लीनियर जो इसकी फॉर्म्स बनती हैं, उनमें सबसे मेन नाम एंटीक्लाइन है. ये आप लोगों को पता भी होगा कि ये स्ट्रेटा नॉर्मली डिप अवे फ्रॉम एक्सियल सेंटर. इसमें ओल्डर स्ट्रेटा जो होता है कोर में होता है. सिंक्लाइन इसके बिल्कुल कह लें ऑपोजिट है. और एंटी फॉर्म जो होती हैं वो डिप अवे फ्रॉम एक्सियल सेंटर है. इसकी एज अननोन होती है. मोनोक्लाइंस हैं इसी तरह ही. और ये देयर स्ट्रेटा डिप इन वन डायरेक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑन ईच साइड. इसके अलावा रिकम्बेंट फोल्ड होते हैं. दे फोल्ड एक्सियल प्लेन्स ओरिएंटेड एट अ लो एंगल रिजल्टिंग इन ओवरटर्न स्ट्रेटा इन वन लिम्ब ऑफ फोल्ड. इसके अलावा डोम है, बेसन है, शेवरॉन है, स्लम्प है, टिग्मेटिक हैं, पेरास्टिक हैं. ये सारे मतलब ये नोमेनक्लेचर्स में आती हैं, क्या इसे कहते हैं, फोल्ड के. तो डोम्स क्या होती हैं, नॉन लीनियर स्ट्रेटा डिप अवे फ्रॉम सेंटर इन ऑल डायरेक्शंस. और जो ओल्डेस्ट स्ट्रेटा होता है वो सेंटर में होता है. बेसन में क्या होता है, स्ट्रेटा डिप टुवार्ड सेंटर इन ऑल डायरेक्शंस. और इसका यंगेस्ट स्ट्रेटा जो होता है सेंटर में होता है. शेवरॉन है, एंगुलर फोल्ड है विद स्ट्रेट लिम्स एंड स्मॉल हिंजेस. और स्लम्प जो है टिपिकली मोनोक्लिनल, द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल कंपैक्शन और डिसोल्यूशन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन एंड लिथिफिकेशन. इसी तरह दूसरे भी हैं. इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये बहुत अहम फीचर्स हैं, और इनको कैसे इनकी चीज़ों को हम करते हैं. फॉल्ट बेल्ट फोल्डिंग होती है, फॉल्ट प्रोपगेशन फोल्डिंग होती है, और इसके अलावा डिटैचमेंट फोल्डिंग्स हैं. ये बहुत काफ़ी इजी हैं. आप जब इसको फर्दर स्टडी करते हैं तो इसमें शेयर जोन्स का बड़ा ज़ोर होता है. और डिटैचमेंट फोल्डिंग क्या होती है, व्हेन अ थर्स्ट फॉल्ट कंटिन्यूज टू डिस्प्लेस अबव अ प्लेनर डिटैचमेंट विदाउट फर्दर फॉल्ट प्रोपगेशन. Detachment folds may form box fold style. These generally occur above a good detachment, such as in Jura mountains, where detachment occurs on middle Triassic evaporites. ठीक है.
اور اس کے علاوہ فالٹ پروپگیشن فولڈز ہوتے ہیں، یہ ٹپ لائن فولڈز ہیں اینڈ دے آر caused when displacement occurs on an existing fault without further propagation. In both reverse and normal faults, this leads to folding of the overlaying sequence, often in the form of a monocline. نیکسٹ ہے فالٹ بینڈ فولڈنگ. اور فالٹ بینڈ فولڈز کیا ہوتی ہیں؟ دے آر کازڈ بائی ڈسپلیسمنٹ along a non planar fault. In non-vertical faults, the hanging wall deforms to accommodate the mismatch across the fault, such as displacement progresses. Fault bend folds occur in both extensional and thrust faulting. In extension, lithuric faults form rollover anticlines in their hanging walls. In thrusting, ramp anticlines form whenever a thrust fault cuts a section from one detachment level to another. Displacement over this higher angle ramp generates the folding. تو اس کا آسان وے میں آپ کو صرف یہی بتا سکتی ہوں کہ ان کے اندر جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ نان پلینر فالٹ ہے. اور جہاں نان پلینر فالٹس آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈسپلیسمنٹس کیسے ہوتی ہیں، ہم اس کے اکارڈنگ پھر چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. جب آپ فیلڈ پہ جاتے ہیں تو اس کو اگر کسی مطلب دو طریقے سے ہم سرچ کر سکتے ہیں نا. تو ڈپ ڈائریکشن جس طرح سے ہم کھڑے ہیں ایسٹ ورڈ ہے، نارتھ ایسٹ سائڈ پہ ہے، تو ہم اس کی ڈپ جب ہم چیک کرتے ہیں کلائنومیٹر سے تو ہمیں کیسے ملتی ہے تو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. پھر پراپر اس کی کہہ لیں بیڈنگ پلین کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، اس کی اسٹرائک کا پتہ لگ جاتا ہے. جب ان چیزوں کی سمجھ لگ جاتی ہے تو ہمارے لیے فیلڈ کو مطلب ہمارے لیے اس کو آبزرو کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو میری آئی ہوپ میری انڈرسٹینڈنگ، میری جو نالج ہے آپ لوگوں کے لیے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہو. اینڈ کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل.